मैं आज न्यायालय में उपस्थित आरोपी को पहचानने में असमर्थ हूँ क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। कहना सही है कि पुलिस ने जब्ती पंचनामा मेरे हस्ताक्षर कराए थे, उस समय जब्ती पत्रक खाली था। जब मान लो कि जब्ती पत्रक जब खाली था, मगर वो जो सीजर का जो पूरा सीक्वेंस है वो तो साफ बता रहा है। पुलिस ने आरोपी को मेरे सामने पकड़ा था। आरोपी अपने पैंट में एक कट्टे रखे हुए थे। आरोपी के पैंट की जेब में 2 से 3 कारतूस थे। कहना सही है कि श्रीमती शिल्पा गुप्ता वर्तमान में शिवपुरी में ही पदस्थ है। ये कहना गलत है कि केस डायरी मेरे सामने कट्टा व कारतूस की जब्ती नहीं थी। और इसमें क्या है, सारे पुलिस वाले हैं। इसको बाद में ले आके इसको साइन करवाया। वो बोलता कि लगभग 1 वर्ष को 6 महीने का 7 महीने कहता, 8 महीने कह देता, 9 महीने कह देता, समझ में नहीं आता है थोड़ा वेरिएशन, मगर डबल दैट पीरियड सीम्स वेरी अनलाइकली। 6 और 1 साल में बहुत फर्क है। गिव द डबल द टाइम। केस शिवपुरी का है क्या? डॉक्टर इसमें 1 साल की सजा थी 25(1)B में। इसमें फाइनल डिस्पोजल के लिए लगाया था आज। ये फाइनल डिस्पोजल के लिए रिकॉर्ड आ गया। यस, व्हाट इज दिस? ऑफेंसेस आर डॉक्टर 25(1)B 1B 1BA। हाँ, क्या है केस? डॉक्टर इसमें ये आपके पोजीशन से फायरआर्म मिला? डॉक्टर बस इतना सा है। नहीं, ऐसा डॉक्टर जो इम्पोर्टेंट जो विटनेस है वो PW2 गिरजा शंकर, जो कि जिन्होंने हमसे जब्ती वगैरह की है उसमें डॉक्टर में ये जब्ती के विटनेसेस क्या कहते हैं? जब्ती डॉक्टर इसमें जो जब्ती वाले हैं वो हॉस्टाइल है। फिर किसके आधार पर कन्विक्ट किया आपको? लॉर्डशिप इसमें बस इतना बताया है कि मिला है इसमें, वो भी कंट्राडिक्शन। मतलब इसमें PW2 का लॉर्डशिप मैं पैरा 2 पढ़ रहा हूँ। मैं वर्ष 2004 में पुलिस लाइन शिवपुरी में आकर मुहर्रम के पद पर पदस्थ हूँ। मेरे पास शिवपुरी क्षेत्र के जिनमें सुरवाया, फिजिकल, देहात, कोतवाली, सतनबाड़ा, सुभाषपुरा, सिरसौर थाना पर जब्त 1 मिनट। PW2 में लॉर्डशिप 2 है। पहला वाला जब्ती विटनेस। जब्ती विटनेस में PW3 है। एक ऐसा ही है मिनट PW2। शिवपुरी में दिलीप वर्मा PW3। 2 कौन है? 2 लॉर्डशिप जो जिसने हमसे आर्म्स जब वो पकड़ा था वहाँ से हमको, जिसका जो आर्म्स था उसकी वो जांच की गई थी, वो हैं ASI गिरजा शंकर जी, जो कि उन्होंने लॉर्डशिप इसमें जो पैरा 2 है उसमें ये कहा है कि यह कहना सही है कि चपड़ी पर फिजिकल ताने की सीन लगी होने का उल्लेख मैंने अपनी जांच रिपोर्ट में नहीं किया है। इसके बाद लॉर्डशिप जो लास्ट है पैरा 3 का। 1 मिनट। लॉर्डशिप PW3 बताया ना आपने? PW3 तो लॉर्डशिप वो है जो जब्ती वाला है, जो हॉस्टाइल है। PW2 है गिरजा शंकर, जिन्होंने जांच की थी उसकी। वो तो हाँ, 1 मिनट। 3 is the independent witness. लॉर्डशिप ये सपोर्ट तो कर रहा है। Yes, 2 तरीके। हाँ, मेन उसने कहा है कि वो कारतूस जब्त हुआ था उस पर वो जैसे मैं आरोपी का ना, मैं किसी गांव गया था, तब पुलिस ने आरोपी को मेरे सामने पकड़ा था। आरोपी अपने पेट में एक कट्टा रखे हुआ था। आरोपी के पैंट के जेब में 2 से 3 कारतूस थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त किया था। जबकि जिसका जब्ती पंचनामा स्वयं ठीक कैसे रहा? PW3 PW3 हाँ लॉर्डशिप लास्ट जो पैरा नंबर 3। हाँ, मैं अनाज को खरीदने बिचवाने की दलाली का काम करता हूं। मुझे जानकारी नहीं है कि किस दिनांक माह 1 वर्ष की घटना है। मुझे आज इस बात का ध्यान नहीं है कि मैं कौन से गांव गया था। मैं अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। मेरे साथ मेरा मित्र अजय वर्मा भी था। हम एक ही मोटरसाइकिल से थे। मेरा निवास महाराणा प्रताप कॉलोनी शिवपुरी में है। कहना सही है कि मेरा निवास शिवपुरी के पश्चिमी छोर पर है तथा यह भदैया कुंड शिवपुरी के पूर्वी छोर पर है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे घर से भदैया कुंड की दूरी कितनी है। यदि योग दूरी 7-8 किलोमीटर हो तो मैं नहीं बता सकता। मैं आज न्यायालय में उपस्थित आरोपी को पहचानने में असमर्थ हूँ क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। कहना सही है कि पुलिस ने जब्ती पंचनामा मेरे हस्ताक्षर कराए थे, उस समय जब्ती पत्रक खाली था। हाँ, तो क्या हुआ? ये वो
जब मान लो कि जब्ती पत्रक जब खाली था, मगर वो जो सीजर का जो पूरा सीक्वेंस है वो तो साफ बता रहा है कि आपके सामने है, वो उसके पैंट के से वेरी क्लियर। मैं किसी गांव से, पुलिस ने आरोपी को मेरे सामने पकड़ा था। आरोपी अपने पैंट में एक कट्टे रखे हुए थे, आरोपी के पैंट की जेब में 2 से 3 कारतूस थे। तो वो जब्ती का जो प्रोसेस है उसका वो विटनेस बिल्कुल सही वो बता रहा है, ही इज रिइटरेटिंग। अब नोटिस में जो आर्म्स क्लर्क जो दूसरा ये कह रहा है कि उपस्थित आरोपी का पहचानने में असमर्थ हूं क्योंकि एज फार एज प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन इज कंसर्न। नोटिस में जो पीडब्ल्यू बने विपिन जैन आर्म्स क्लर्क है, हाँ, उसका पैरा 2 है कहना सही है कि श्रीमती शिल्पा गुप्ता वर्तमान में शिवपुरी में ही पदस्थ है कहना सही है कि कट्टा व कारतूस चालू अवस्था में होने बाबत कोई जांच कलेक्टर कार्यालय में नहीं हुई थी। कहना सही है कि केस डायरी में कट्टा व कारतूस चालू अवस्था में होना लेख किए जाने के आधार पर अभियोजन की स्वीकृति आदेश पारित किया गया था। कहना गलत है कि जिला दंडाधिकारी केस डायरी कोई परीक्षण नहीं किया गया था। इसका ये कहना गलत है कि केस डायरी कहना गलत है कि जिला दंडाधिकारी ने केस डायरी का कोई परीक्षण नहीं किया था तथा औपचारिक रूप से प्रदर्श P1 का आदेश पारित किया था। that has been denied. So he says that she has gone through the file and then given a sanction. She is a sanctioning authority. अब नोटिस में जो PW2 है ESI जिसने उसका निरीक्षण किया था कट्टे का, उसका नोटिस में जो पैरा 2 है उसमें चौथी 5वीं लाइन है कहना सही है कि चपड़ी पर फिजिकल ताने की सील लगी होने का उल्लेख मैंने जांच रिपोर्ट में नहीं किया। इसके बाद पैरा 3 में है 3rd लाइन है नोटिस, मेरे सामने कट्टा व कारतूस की जब्ती नहीं थी। नोटिस जो इसका पैरा 3 है कहना गलत है कि मैंने जांच के दौरान जब्तशुदा कट्टे को चलाकर नहीं देखा था, स्वतः खाया कि खाली चलाकर एक्शन चेक किया था। कहना गलत है कि जब्तशुदा कट्टा चालू हालत में नहीं था। कहना सही है कि मेरे सामने कट्टा व कारतूस की जब्ती नहीं थी। और इसमें क्या है, सारे पुलिस वाले हैं। इसमें PW4 है आरक्षक है, PW5 सहायक उपनिरीक्षक है, PW6 आरक्षक है। कोई इंडिपेंडेंट कोई विटनेस नहीं है। मतलब सिर्फ एक है जो दिलीप वर्मा, वो दिलीप वर्मा इज PW3 है बस। और दूसरा विटनेस कौन था सीजर का? सीजर का मतलब से उसमें है इंडिपेंडेंट तो यही था, बाकी तो प्रोसिक्यूशन बहुत तो समलोट से जो सूचना मिली थी वहाँ से बीट पे, तो वो उनका गाड़ी से जाना आना सब बताया गया मतलब से। इसमें मतलब से PW4 है कोमल सिंह राठौर आरक्षक है, उसका मतलब से मैं पैरा 2 पढ़ूँगा। मैं फिजिकल थाना शिवपुरी पर लगभग। इंसिडेंट कब की थी? इंसिडेंट कब की थी? इंसिडेंट मतलब 14/7/18 14/7/18 ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था बिटवीन द इंसिडेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ PW3 इन ट्रायल कोर्ट। उसका स्टेटमेंट हुआ ट्रायल कोर्ट में 17/1/19 को, 6 महीने के अंदर। इस घटना आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व की है। मैं किसी गांव में गया था, आरोपी he was not there, वकील साहब। come to the first paragraph of PW3। घटना आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व की, शाम के 4-5 बजे, 6 महीने का था। between 14/7/2018 and the date on which he gave his statement before trial court is 17/1/2019। उसको बाद में ले आके इसको साइन करवाया। वो बोलता कि लगभग 1 वर्ष पूर्व, 6 महीने का 7 महीने कह देता, 8 महीने कह देता, 9 महीने कह देता, समझ में भी आता है कि थोड़ा वेरिएशन, मगर डबल दैट पीरियड seems very unlikely. He seems to have, and that is why when you connect that, his error with relating to the date and his state cross examination में जो statement है कि आज मैं उसका चेहरा देख के पहचान नहीं पाया, it shows that he is a trumped up witness. He was brought later on, and then the documents being empty when he signed, they have to be seen in the light of his statement. बाकी वो सीजर में उसने बोल रहा है कि ये सीजर में उसने कहा, मगर सीजर वो बोलता कि घटना लगभग 1 साल पहले का, वो 6 महीने पहले का।
6 और 1 साल में बहुत फर्क है. He's given the double the time of the period. और अगर ये वाकई उस दिन था 17, 14, 7, 18 की बात है ना, ये स्टेटमेंट हुआ है 17/19 इंसिडेंस 14/7/2018 का. तो दैट्स रीजनेबल टाइम टू बी फ्रेश इन योर माइंड. My lord. इसमें लिखिए, the present revision petition has been preferred by the petitioner herein, who says that the petitioner has falsely been implicated in this case, and that both the learned courts below have not appreciated the evidence in the proper perspective. Full stop. He further says that PW1, who was who is the employee from the office of the district magistrate, who has proved the sanction for prosecution, but the sanctioning authority has not been examined. केस शिवपुरी का है क्या? लॉर्डशिप Examined before the trial court. Full stop. Learned counsel for the state submits that the scope for interference in the criminal revision is very limited, and there are concurrent findings on fact and law against the petitioner herein, and therefore does not call for any kind of interference by this court. Full stop. Learned counsel for the petitioner, on the other hand, submits that the petitioner has been falsely implicated. Full stop. He refers to the statement of PW3 and says that the independent witness to the seizure has turned hostile, and the remaining witnesses are all employees of the police department who are all interested witnesses. Full stop. He further says that the district magistrate, though was posted at Shivpuri during the relevant time when the statement of the employee of the office of the DM was recorded to prove the sanction, itself goes to vitiate the sanction order, as the district magistrate was never examined to show that there was application of mind while passing the order of sanction for prosecution. Full stop. Heard the learned counsels for the parties and perused the evidence on record. Full stop. The PW1 is the clerk who is working in the office of the district magistrate Shivpuri. Full stop. In his examination in chief, he says that the district magistrate, Mrs. Shilpa Gupta, granted sanction for prosecution under the relevant provisions of the Arms Act after examining the case diary, the country-made firearm and cartridges. Full stop. He further identifies the signature of the district magistrate as he has been posted in the said office since long. Full stop. In cross-examination, he states that Mrs. Shilpa Gupta, the district magistrate, was posted in Shivpuri as on 2012-2018. Full stop. He further admits as correct that the case diary does not disclose. Well, it says that he further states that it is correct to suggest that the sanction for prosecution was granted after satisfaction that in the case diary it was mentioned that the cartridges were live rounds and the firearm
was in a working condition. Full stop. He thereafter points to the statement of PW3, who is the sole independent witness in this case. He says that he says that he knows the petitioner from the date of the incident. He further states that the incident has taken place a year before his statement in court. Full stop. He further states that in his presence, the police had seized the offending firearm tucked in the pant of the petitioner, and also 2 to 3 live rounds, 2 to 3 cartridges, 2 to 3 cartridges from the pant pocket of the petitioner. Full stop. He further states that the seizure memo is Exhibit P3 and that he has signed the same in the portion marked A to A. He further states that the petitioner was arrested in his presence by the police and the arrest memo is Exhibit P4, in which he has signed in the portion marked A to A. Full stop. The prosecutor has, however, declared him hostile as he missed out certain minor incidents relating to the said date. Full stop. In cross-examination by the defense, this witness states that he was unable to identify the petitioner on account of the passage of time. Full stop. He also admits that the seizure memo Exhibit P3 was blank when he put his signature. Full stop. Learned counsel for the petitioner submits that the infirmities in the statement of PW3 render it unreliable. Full stop. Next paragraph. Per contra, learned counsel for the state submits that the witness has supported the case of the prosecution as regards the core of the prosecution's case, that is with regard to the seizure of the offending firearm and the cartridges, and that the aberrations, if any, are too minor and do not go to the root of the prosecution's case. Full stop. Next paragraph. Heard the learned counsels for the parties and perused the documents, perused the record of the courts below. Full stop. The incident is of 14/7/2018. And the petitioner was arrested on the same date. Full stop. The arrest memorandum is Exhibit P4 and the FIR registered against him is Exhibit P7. Full stop. As per the prosecution story, the petitioner was apprehended that on 14/7/2018, upon information received, the police made an entry in the Roznamcha, column 18, and proceeded to Khinni Naka, and there made contact with the independent witness Dilip and proceeded and intimated him about the source information that a person in a black colored Honda
motorcycle without number plate is in possession of a country-made firearm and was going to give effect to a crime and could be found between Narendra Nagar and Chhatri. Full stop. It is further stated in the FIR that upon seeing the police vehicle, comma, the petitioner attempted to run away. However, he was apprehended and from his possession a country-made firearm which was found in a loaded condition of opening which, comma, a live cartridge was recovered and there was another live cartridge kept in the pocket of the petitioner. Full stop. It is further stated that the petitioner did not possess a license for the weapon and the ammunition. Full stop. Therefore, he was booked under section 25 and 27 of the Arms Act. Full stop. Full stop. The police witnesses have all supported the case. However, in such a case, it is to be understood that the police is an interested party to the outcome of the prosecution, and therefore due weightage must be given to the independent witness, who in this case is PW3. Full stop. PW3 says in his examination in chief that the incident is about a year old. No, it says that the incident took place a year before he stepped into the witness box. Full stop. PW3 has testified on 17/1/2019 and the incident is of 14/7/2018. Full stop. Thus, within a passage of 6 months, comma, it does raise a suspicion if the witness was there at the scene of occurrence at all. Full stop. It may be natural for the witness to state, full stop. It may be reasonable to accord a margin of error of 1 or 2 months while a witness recalls an incident allegedly witnessed by him 6 months ago. Full stop. However, where the witness is incorrect factually by almost 6 months, comma, his presence at the scene of occurrence is to be doubted. Full stop. Undoubtedly, comma, he states in his examination in chief that he had witnessed the police seize the offending firearm which was tucked into his pant and also the cartridges from his pocket. Full stop. However, comma, the truth of a statement is, full stop, the truth of a statement cannot be arrived at merely by appreciating the statement given by the witness in chief, but the same has to be correlated with the statement given by the witness in his cross-examination. Full stop. In this case, comma, in paragraph 3, PW3 says that he is unable to identify the applicant on account of the passage of time, and therefore has not identified the applicant in dock while the petitioner was in the dock. Full stop. In paragraph 4 of the cross-examination, the witness says that it is correct to suggest that when he signed the seizure memo, exhibit P3,
the same was blank. Full stop. Therefore, comma, when the statement of the witness in cross-examination is seen along with his statement in chief, comma, there is a reasonable doubt which has been generated that PW3 may not have been at the scene of occurrence. Full stop. It is trite law that while the prosecution has to prove a fact in issue or a relevant fact beyond reasonable doubt, comma, the defense on the other hand has to merely raise a doubt on the anvil of preponderance of probability against the case of the prosecution. Full stop. Therefore, this court has no hesitation in holding that PW3, who is the independent seizure witness, is unreliable. Full stop. Next paragraph. As regards PW1, who has proved the sanction granted by the district magistrate, comma, the same deserves to be discarded, as it is not the case of the prosecution that the authority which had given the sanction was not available on account of her death, or that she could not be produced before the court without unreasonable delay on account of her transfer, comma, superannuation, transfer or superannuation. Full stop. PW1 in fact states that the district magistrate who gave the sanction was very much available in the same district on the date on which PW1 gave his statement. Full stop. Under the circumstances, the prosecution was bound to get the order of sanction proved through the district magistrate itself, who had passed the said order, as it was for the authority to establish a state whether there was application of mind and on what basis she had given the sanction. Full stop. Next paragraph. Under the circumstances, comma, the conviction of the petitioner by the learned court below and the appellate court is perverse, as benefit of doubt has been given to the prosecution and not to the defense. Therefore, comma, the petition succeeds and the impugned orders are set aside. Full stop. The petitioner is acquitted and his bail bond stand discharged. With the above, this petition is finally disposed of.